Okay, so let us today start with the chapter standard costing and let us understand what is standard costing all about. Okay, so write it along with me. I'll be explaining you and simultaneously we'll be writing it. Okay, so note this down. First, meaning. Okay, meaning of standard costing. So note down. It is one of the techniques for calculating total cost. Okay, now we know that the objective of cost accounting is C plus P equal to S. This is the objective of cost accounting as a subject, where the first objective is to calculate cost, the second objective is to calculate profit, third objective is to calculate sales, fourth objective is to control cost, control total cost, and fifth objective is reporting. Barabar? Okay. And in the earlier theory part, when we were doing cost sheet, I had told you that every chapter of cost accounting will always justify this formula. C plus B equal to S. Correct? So here also it is the same thing. It is a technique to calculate total cost, and here total cost is divided as direct cost and indirect cost. Direct cost में you have material, labor, and indirect cost में we label it as overheads. Overheads may you have variable overheads and fixed overheads. Okay, so this is all about standard costing. So this technique helps in controlling cost obviously and to achieve the sales target in connection to earning future profits. Is it clear till here to everyone? यहाँ तक समझ में आया? What is standard costing? Okay. Next, see what I'm saying. Huh? C plus B equal to S. ठीक है, ये मेरा कॉस्ट से है 20 रुपया कॉस्ट है मेरा, उसको भी मैंने डिवाइड कर दिया। 10 रुपया मेरा रॉ मटेरियल है, ओके, 5 रुपया मेरा लेबर है और बाकी का 5 रुपया मेरा ओवरहेड्स है, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो 10 + 5 15, 15 + 5 इज 20, तो हो गया मेरा 20 रुपीज़ जस्टिफाई। ठीक है, नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग। I had estimated my cost for raw material. Say I had estimated it 10 rupees because I took example of 10. Labor I estimated 5. Same example I'm taking, okay? And overheads also I'm estimating at 5. Now estimate आप कब करते हो? Beginning में, starting में, okay? And actually I ended up paying instead of 10 rupees, 12 rupees for raw material, 4 rupees 50 paise for labor, and 5 rupees 50 paise for overheads. Okay. Now, what will I do next? I will compare कि मैंने क्या estimate किया था और मैंने क्या actually भरा. I will start comparing it. I will compare between the standard and actual. Okay. So when I compare between the standard and actual, what will I do? I will subtract.
10 रुपीज़ से 12 रुपीज़ हुआ, कितने का डिफरेंस आया? 2 रुपये का डिफरेंस आया। 5 रुपये से 4.5 रुपये हुआ, कितने का डिफरेंस आया? 50 पैसे का डिफरेंस आया। 5 रुपये से 5.5 रुपये हुआ, कितने का डिफरेंस आया? 50 पैसे का डिफरेंस आया। So what am I doing? I'm calculating the difference between estimated cost and actual cost. Okay, so this difference between estimated cost and actual cost is known as variance. Okay, so the difference between estimated cost and actual cost is what? Variance. Okay, now think from business point of view. 10 rupees का raw material आपको 12 rupees में मिला. Okay, the 2 rupees you're paying more. Okay, is it good or bad for the business? Yeah, write it in the chat box. Is it good or bad? Think from business point of view. 10 rupees raw material, you got it for 12. Good or bad? Yeah, it is absolutely right, Devanshi. It is bad. Why? Because there is an increase of 2 rupees per unit से बढ़ गया, बराबर? तो from business point of view, this is bad. Okay. What about labor, Devanshi? 5 rupees का 4.5 हो गया. 5 rupees का 4.5 हो गया. गुड और बैड? इट्स गुड. आपका 50 पैसा सेव हो गया. आई एम पुटिंग प्लस. मेरे लिए पॉजिटिव वरायंस है, बराबर? या वेरी गुड देवांशी. या बिकॉज इट इज सेविंग योर कॉस्ट. सेम गोज फॉर ओवरहेड्स. 5 का 5.5 हुआ, बढ़ गया, नेगेटिव हो गया. ओके, तो ये जो वरायंस है, दीज वरायंसेस आर कैटेगराइज्ड into two types. One is called as a favorable variance and one is called as an adverse variance. Okay, so this negative variance is called as an adverse variance and this positive one is called as a favorable variance. Okay, negative is denoted with capital A, positive is denoted with capital F. Okay, even in the third case it is adverse. So in standard costing, we don't write -2, +2. We will write 2a, 2f like this. Okay? माइनस प्लस साइन आगे नहीं लिखेंगे नंबर के. 2a, 2f जो भी आंसर आएगा उसके आगे a या f डालेंगे. तो इट इज अंडरस्टूड इट इज नेगेटिव and positive respectively. Is it clear to you? Okay, fine. Great. ठीक है, तो what did we do? We first estimated a cost. Okay, then we compared it with the actual cost. The difference between actual cost and standard cost is known as variance. Okay, so now note down this. Give this example. Cost is 20. So this estimated cost, which I took 10, 5 and 5 respectively, is known as pre-cost, which is known as standard cost. ठीक है? So first we understood what is standard costing. Then we understood what is standard cost. Okay, so the other name for standard cost is what? Pre-cost. Or estimated cost. Okay, note down this example which I have written on the screen. Okay, ये रहा pre-cost और standard cost. ठीक है, दोनों को क्या किया मैंने? कंपेयर किया, एक्चुअल कॉस्ट को और प्री कॉस्ट को. ठीक है, तो मुझे वरायंस मिला. वरायंस इज ऑफ टू टाइप्स, फेवरेबल वरायंस एंड एडवर्स वरायंस. ओके, सी इधर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है. 10, 5, 5.
तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 20, इधर 12, 4.5, 5.5, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 22। तो 2 रुपीज़ से ओवरऑल आपका कॉस्ट बढ़ गया। Okay, so we are able to identify this. Okay, individually also and overall also 20 का 22 हुआ, तो 22 हुआ तो 2 रुपया बढ़ गया, तो 2 रुपया कहाँ कहाँ बढ़ा, राइट। सी आपको यहाँ से भी पता चलेगा। सी दिस variance section 0.5 minus 0.5 0, तो क्या बचा -2। सी 20 minus 22 is how much, -2। समझ में आया? इज द एग्जाम्पल क्लियर? Everyone note it down, na? Next, note down all this theory part. It's important from exam point of view. Standards are set at the beginning of the year. Which is then compared by the actual cost at the end of the year. Okay, difference between standard and actual is known as variance. This all theory part will help you for your MCQs. So please note it down. Don't waste your time. Don't sit idle and just listen to the lecture. Write down. Okay, so see, the definition of variance is the formula itself. What is variance? Difference between standard cost and actual cost. तो देखो formula कैसा है? Variance is equal to standard cost minus actual cost. समझ में आ रहा है everyone? See, this is a very logical chapter. अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया तो आपको इसके फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली याद रहेंगे, अदरवाइज इट्स अ टास्क, because you'll have to mug up then, and when you mug up obviously you end up making mistakes. Then write about this two types of variance, positive variance and negative variance. Okay, now what is the use of this chapter? अभी अगर जो भी मैंने आपको एक आइडिया दिया, एक फ्रेमवर्क दिया इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर का यूज़ क्या है? ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा यूज़ ये है दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई the stage of cost, like for raw material, you can identify increase decrease for material, for labor, for overheads also. Okay, so when you are able to identify the negative and the positive variance, then you are able to have a catch of your business. You're able to have a framework, you can analyze your business. अगर तुम्हें समझ में आ गया है कि your raw material has increased by 2 rupees, okay, I mean there is a negative variance, so what you will try to do, you will try to make a you will try to take up decision, change your business strategies in such a way that this negative variance of the raw material in future, in the coming few days, becomes a positive variance for the business. Okay, so that's important. How marginal costing helps or assist in effective and better decision making
in the recession period or in the short run period. Similarly, standard costing also is a short run concept, and its technique is very beneficial for manufacturers in the short run. Okay, if you want to overcome your recession, you can apply techniques like marginal and techniques like standard. Okay, so when these variances are analyzed, then it helps in effective decision making. Okay, if there is an adverse variance, it indicates a need for better and effective controlling of cost. It also indicates a need for better and effective decision making process with respect to sales, cost and profit, obviously, because ये तीन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग के, करेक्ट? और आप बिजनेस इसी थ्री रीजंस की वजह से करते हो. ओके, लेकिन अगर एक फेवरेबल वरायंस आपको आता है, तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट द बिजनेस इज गोइंग गुड, इट इज गोइंग स्मूथ, एंड वॉट एवर स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स यू हैड अप्लाइड in the business, continue with the same strategies and same technique. It indicates that. ठीक है? एंड हाँ, और अगर आप और बेटर डिसीजंस ले सकते हो और बेटर पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर सकते हो विच फेवर्स योर बिजनेस सच दैट योर सेल्स, योर प्रॉफिट इंक्रीजेस, देन व्हाई नॉट. ओके, प्रॉफिट वरायंस मतलब जब तुम्हारा पॉजिटिव वरायंस आता है तो आप पॉजिटिव वरायंस को और इंक्रीज करने की सोचोगे, करेक्ट? और नेगेटिव वरायंस आता है तो उसको आप नलीफाई करने की सोचोगे. ठीक है? या बिकॉज अगर आपका फेवरेबल वरायंस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट, आपका सेल्स बढ़ेगा. दैट्स एन इंडिकेटर. ओके, क्लियर टिल हियर? इज इट अंडरस्टूड? नेक्स्ट, this also I had explained to you. Standard cost may, I mean, total cost is divided as material, labor, variable overheads, and fixed overheads. Out of which, material and labor is only there in your syllabus. ये दो आपके syllabus में है. These two is not in your syllabus. Okay, fine. Okay, now let us understand how is standard costing calculated. मैंने बोल दिया इट्स अ टेक्निक टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट. ओके, या तो कैसे, हाउ, राइट? नाउ वी विल स्टडी दैट. तो फॉर दैट पर्पज यू शुड नो the steps in calculation of standard costing, matlab how standard costing is applied. It is applied in 3 steps. Okay, step 1 2 3. And rather than doing the theory part of step 1 2 3, I have planned to do it along with the sum so that you can sync, you can relate it with the theory part. तो आपको बराबर समझ में आएगा कि हमें करना क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में. ओके, 3 स्टेप को कैसे करना है. फाइन, तो प्लीज नोट डाउन द 3 स्टेप्स. स्टार्ट. दिस इज द क्वेश्चन. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द क्वेश्चंस विद यू ऑल इन द गूगल क्लासरूम. सो दिस इज दैट क्वेश्चन. तो एक चीज हमेशा याद रखना, व्हाट डिड आई टेल यू? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में व्हाट आर वी डूइंग? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वरायंसेस. ओके, तो वरायंस कैसे मिलता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट से हमको वरायंस मिलता है, करेक्ट? दैट मीन्स क्वेश्चन पेपर में स्टैंडर्ड और एक्चुअल्स का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा. Information about standard and actuals will be given in the question, and what you have to find in the question will be the variance, whether it will be a material variance, whether it will be labor variance, either of the one. It can be both also. Okay, समझ में आया? So look, have this question number 19. Try to relate it with what I said. मैंने क्या बोला? आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा. सी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. स्टैंडर्ड कितना है? 25 यूनिट्स. रॉ मटेरियल कितना लग रहा है? 50 kgs. एंड व्हाट इज द रेट पर रॉ मटेरियल? 25 rupees per kg. Actuals is how much? 20,000 units. And how much raw material is used? 42,000 kgs. And what is the actual rate of raw material? 24 rupees 50 paisa. Okay, yeah.
and you are supposed to calculate these three variances: material cost variance, material price variance, and material usage variance. Okay, understood the question? Question में what will be given and what you have to find. Okay, so if it's a labor ka sum, you will have to calculate labor variance. If it's material related sums, you will have to calculate material variance. Okay, start with step one. Okay, एक चीज हमेशा याद रखना. What did I tell you? Standards are compared with actuals. Don't forget this word compared. This is very important. Okay, standards are compared with actuals to get the variance. Okay, now what do you understand by this word compared? So in standard costing or whatever technique you apply, wherever you compare, comparison is always with same base. If the base is not same, you cannot compare. Say for example, if I want to find topper of TY BCom students, toppers among TY BCom students. So whatever students I will consider for the toppers will be from TY BCom only. I cannot pick up a student from SY BCom because that will not match the base. Okay, what is my requirement? Toppers of TY BCom. So my comparison also will be of people from TY BCom. Understood? Similarly, when I am comparing in standard costing, so my output has to be equal. Comparison is always between equal base. Okay, तो जैसे if you look into this question, आपका standard output कितना है? 25 units. और आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है? 20,000 यूनिट्स. तो ये आउटपुट जब हम कंपेयर करेंगे तो आउटपुट ही सेम नहीं है, output is unequal. Jabki when you compare, it has to be equal. Okay, so the first thing in the question paper you will see is whether the output is equal or it is unequal. इक्वल है तो अच्छी बात है, मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. बट अगर अनइक्वल है देन यू हैव टू make it equal. Okay, like in this sum, it is 25 units and 20,000 units, so they are unequal. Okay, so write down step 1. Step 1, check standard output is equal to actual output. Standard output is 25 units, actual output is 20,000 units, so they are unequal. So when they are unequal, what did I tell you? You have to make it equal. तो जब आप स्टैंडर्ड आउटपुट को इक्वल बनाते हो तो उसको बोलते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स. ओके, इट इज कॉल्ड एज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो लिखो therefore now revise the standards. सी, ये अनइक्वल हुआ ना, इसके बाद ये स्टेप लिखने का. नाउ रिवाइज द स्टैंडर्ड्स, दैट इज मेक इट इक्वल. तो मेक इट इक्वल टू एक्चुअल्स ऑब्वियसली. 25 यूनिट्स तो आपका एस्टिमेट्स था, एक्चुअली आपने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया. तो आई विल ऑलवेज मेक माई रिवाइज स्टैंडर्ड्स इक्वल टू एक्चुअल स्टैंडर्ड्स. ओके, रिमेंबर ऑल दिस फॉर थ्योरी पर्पस. या ठीक है, नाउ प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट. Okay, make this columns: raw material type, given standards, revised standards, actuals. So in this question, there is only one raw material which is used. You may have multiple raw materials also. So as and when we progress from mediocre sums to high level sums, so you will see there is multiple raw material used. Okay. So raw material 1, given standards. 25 units pay. Raw material used is how much? 50 kgs. Rate is how much? 25 rupees. So multiply amount. ठीक है, 50 into 25, 1250. Okay, quantity, rate, amount. Then come to actuals. 20,000 units pay. Quantity is how much? 42,000 kgs. It's given in the question. Rate is how much? 24.5. Multiply 42,000 into 24.5 is how much? 10 lakh 29,000. Okay.
सो मेरा एक्चुअल्स भी हो गया 10,29,000। ठीक है, अब क्या है, मैंने मेरे स्टैंडर्ड्स को चेंज कर दिया है, राइट। 25 था, अब मैंने उसको रिवाइज कर दिया है 20 पे, तो ऑब्वियसली मेरा क्वांटिटी भी चेंज होगा, बट ऑब्वियस है, तो लेट अस कैलकुलेट दैट। 25 पे 50 केजीज, तो 20,000 पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 यूनिट्स पे इट इज 50 केजीज, तो फॉर 20,000 यूनिट्स इट इज हाउ मच, so 20,000 into 50 divided by 25, 40,000 is my answer. Okay, and since it's a short run concept, so rate will not change in the short run, so 10 lakhs is my answer. समझ में आया everyone? Is this clear? So when you revise your standards, you have to revise your quantity also. रेट रिवाइज नहीं होगा, इट इज अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट, शॉर्ट रन में प्राइस चेंज नहीं होता है। Okay, so this completes step 1. Okay, so next lecture we will continue with step 2. Step 2 and then step 3. Okay, so let me brush up with the first, what you called, the first step. So the first step in material, in standard costing is you have to check your outputs. Okay, because standard costing is all about what? About comparing the standard cost with the actual cost. Okay, and when you compare in this process, you calculate your variance. So variance is what? Standard cost minus actual cost. Okay, so for this reason the first step becomes that you have to compare your output, because I can compare my cost only when my outputs are same. Okay, so the first step is always to check whether the outputs are same. So if you look into this question, your output is how much? 25 units. Okay, and your actual output is how much? I mean your standard output is how much? 25 units, and your actual output is how much? 20,000 units. Okay, so obviously they are unequal. 25 or 20,000 equal to hai hi nahi, they are unequal. Okay, so this is the first step you will be writing, that they are unequal. So whenever your outputs are unequal, obviously the next step will be to make it equal. Okay, so how do you make it equal? By equating it with your एक्चुअल आउटपुट। तो आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है? 20,000। स्टैंडर्ड क्या होता है? एस्टिमेट्स होता है। तो एस्टिमेट्स और एक्चुअल्स को सामने रखेंगे, तो एक्चुअल्स तो वो है जो आपने एक्चुअली प्रोड्यूस किया है, एक्चुअली पे किया है। ओके, सो दैट इज व्हाई योर स्टैंडर्ड्स विल बी ऑलवेज इक्वेटेड टू योर एक्चुअल्स। ओके, so these are the 3 columns that you will be preparing. Statement of material cost, the raw material type. So in this sum there is only one raw material type which is in use. Okay, there can be multiple raw materials also. So obviously next sum that I will be taking on multiple raw material. The standards are given, 25 units pay 50 kgs and the rate is 25. So just multiply, you will get your answer. Okay, so 50 into 25 is 1250. Okay, then come to your actuals. Your standard output is how much? Actual output is how much? 20,000 units. Okay, actual output. Fine. So 20,000 के सामने कितना रॉ मटेरियल यूज हो रहा है? 42, एंड व्हाट इज द रेट? 24.5. तो 42 kgs आपने रॉ मटेरियल खरीदा एट द रेट 24.5. सो टोटल यू स्पेंड 10,29,000 ऑन योर रॉ मटेरियल. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव टू रिवाइज योर स्टैंडर्ड्स. क्यों? क्योंकि पहले आपने एस्टिमेट्स कितने का लिया था? 25 का. अब आपने उसको इक्वेट कितने पे कर दिया? 20 पे. तो आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी चेंज होगा, राइट? या सो फॉर 25 यूनिट्स माय रॉ मटेरियल कंजम्पशन वाज 50 kgs. So for 20,000 units, how much? So cross multiply.
So 20,000 into 50, that's just a minute, okay? Yeah, divide by 25. So 20,000 into 50 divide by 25. 40,000. Okay, so my answer is 40,000. So now I've revised my standards. Yeah. Since it's a short run concept, short run में price change नहीं होता है, इसलिए standard rate will remain same, 25 only into 25. So 10 lakhs is my answer. Okay, total it. So this completes my step 1. Okay, so this is step 1. ओके, तो स्टेप 1 में आप क्या करने वाले हो? सबसे पहले आप आपका आउटपुट कंपेयर करोगे. आउटपुट इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल भी करोगे. ओके, एंड व्हेन यू इक्वेट योर आउटपुट यू हैव टू सी टू इट दैट यू आर रिवाइजिंग योर रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऑल्सो. जैसे ये मैंने रिवाइज किया, 50 kgs था तो मैंने इसको रिवाइज कर दिया. देखो बराबर. ओके, या रेट नहीं चेंज होगा बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट. शॉर्ट रन में प्राइसेस डोंट चेंज. Okay, so this completes my step 1. Step 2 is what? Calculating the formulas. So please note down the formulas. Yeah, write down. Since it's your first sum, so along with the theory only I'm teaching you the sum. So please note down in this manner. Yeah. Material cost variance is equal to total standard cost minus total actual cost. Okay, when I talk about cost, I am talking about of total cost. Okay, like this. So इसलिए फॉर्मूला में आएगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट. आई होप आई जस्ट रिवाइज्ड इट फॉर यू ऑल. व्हाट इज वरायंस? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल. ओके, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने का. एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, इट इज ऑलवेज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, बिकॉज आप पहले एस्टिमेट करते हो फिर एक्चुअली आप पे करते हो. नेक्स्ट, material cost variance is further divided into material rate variance and material usage variance. Okay, so write all these things. Material cost variance is further divided into material rate and material usage. Material rate variance का दूसरा नाम है material price variance. Okay, yeah. So formula will be what? I have to calculate क्या? Rate निकालना है ना? Yeah. So standard rate minus actual rate into actual quantity. Rate will be always multiplied with quantity. Okay, like this concept. And which quantity? Obviously, it will be always the actual quantity because that is what you have actually produced. समझ में आया? तो फॉर्मूलेस को लॉजिक से याद रखो, रट्टा मत मारो, वरना एग्जाम में सब फॉर्मूलाज इधर उधर गड़बड़ हो जाएंगे. तो रिमेंबर फॉर्मूलाज लॉजिकली. Standard rate minus actual rate into actual quantity. Then usage variance. Usage variance is further known as quantity variance. So the formula is standard quantity minus actual quantity into obviously standard rate. ठीक है? Okay. These abbreviations are allowed. You can use these abbreviations. Okay. Then quantity variance is further divided into two types. Yeah, please note it down. Material mix variance
and material yield variance, material mix variance and material yield variance. Material mix variance formula is revised standard mix, mix matlab quantity. Revised standard mix minus actual mix into standard rate. I repeat, mix matlab quantity होता है. Blend, yeah. And material yield variance, when I'm talking about yield, I'm talking about total output. तो total standard quantity minus total actual quantity into, जब आप quantity का टोटल लोगे तो जो रेट होगा वो एवरेज रेट होगा. ओके, से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2 एंड रॉ मटेरियल 3. ठीक है, से रेट्स है 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड 15 रुपीज. ठीक है, तो व्हेन आई विल कैलकुलेट यील्ड वेरिएंस आई विल हैव टू टेक केयर एवरेज स्टैंडर्ड रेट. आई कैन नॉट टेक ऑल द 3 रेट्स. ओके, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा. ओके, कैसे निकलेगा एवरेज? Yeah, there are two ways to calculate this average. Yeah. One way is to add all this 5 plus 10, 15, 15 plus 15, 30. 30 divided by 3. So answer is 10. So the average rate is 10 rupees like this. This is one way of doing. And there is one more way of calculating this, and that is total standard cost divided by total standard quantity. ओके, यू कैन यूज बोथ. दोनों से आंसर सेम ही मिलता है, अलग अलग आंसर नहीं मिलता है. ओके, इज दिस क्लियर? जस्ट एक्नॉलेज इट इन द चैट बॉक्स. ठीक है, नाउ राइट अ नोट फॉर मटेरियल मिक्स variance. Right down, this variance is calculated only when more than one raw material is used. अगर आप एक रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो तो मटेरियल मिक्स variance is not calculated. But if there is more than one raw material you are using for making your finished product, then material mix will be calculated. And the next thing is material mix variance is not in your syllabus. ओके, आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसका थ्योरी है, इसलिए मैं थ्योरी वाइज इसको बता रही हूँ. सम में नहीं है आपको. मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज नॉट देयर इन सम्स फॉर यू टू कैलकुलेट फॉर कैलकुलेशन फॉर TY BCom स्टूडेंट्स. Okay, but if any student is in TY BAF, then their material mix variance is there in their syllabus. You all just have a knowledge, I mean, you all just have a tinge of material mix variance, just as the theoretical part, like the one which I said, it is calculated only when you are using more than one raw material type for making your final product. Okay. Okay, so this is my step 2. Okay, ये theoretical part था. Yeah. Now I will do the calculations. Okay. So calculations I'll be doing it here. Chalo, start. Okay, step 2, I'm doing the calculations. Calculation of formulas. Okay, so what is the first formula? Material cost variance पूछा है. So total standard cost minus total actual cost. Okay, come to the statement. ये रहा. Okay, come to the statement. Can you see this? 10 lakhs. And can you see this 10 lakh 29? Yeah. So this is my total standard cost and this is my total actual cost. Okay. Am I clear? समझ में आया? What is total standard cost and total actual cost कहाँ से मिलेगा? Yeah. So 10 lakhs minus 10 lakh 29. Okay. Fine. ठीक है. 10 lakhs minus 10 lakh 29.
सो 29,000 का डिफरेंस है, तो राइट ए। नेगेटिव है ना, कैल्सी पे नेगेटिव आया ना, तो 29,000 ए एडवर्स। ठीक है, इट इज़ नॉट गुड फॉर बिजनेस। आपने सोचा था 10 लाख रुपया खर्चा होगा, पर 10,29,000 रुपीज़, 10,29,000 खर्चा होगा। नेक्स्ट, मटेरियल रेट वरायंस और प्राइस वरायंस। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू actual quantity. Okay, yeah, now let us go through the question statement पे आओ। standard rate, can you see this column? Yeah, this is my standard rate and this is my actual rate multiplied with actual quantity. See the actuals का column, quantity का, this is my actual quantity. Okay, like this. Please highlight all these things. So write down here, solve it. Standard rate 25, actual rate 24.5, actual quantity 42,000. ठीक है, solve it. 25 minus 24.5 into 42,000. 21,000 is my answer. So write it here. 21,000. On calci it is coming positive. So write F. Favorable है ये. ठीक है, समझ में आया? Next, material usage variance or quantity variance. Standard quantity minus actual quantity into standard rate. Let me take you to the statement. Let me highlight. This is my standard quantity, ये मेरा actual quantity और ये रहा मेरा standard rate. तो 40,000 minus 42,000 into standard rate is 25 rupees. So solve this. 40,000 minus 42,000 into 25. Answer is 50,000. So this is negative on calci, so 50,000 adverse. Okay, so this completes my step 1. Yeah, very good, Karina. Okay, तो my step 2 is also done. Step 1 हो गया, step 2 भी हो गया. ओके, अब मैं इसमें आपको और एक वरायंस कैलकुलेट करके दिखाती हूँ. क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही वरायंस पूछा है. या लुक इनटू द क्वेश्चन. ये रहा क्वेश्चन, 3 ही वरायंस पूछा है. कॉस्ट, प्राइस, प्राइस मतलब रेट, और यूसेज पूछा है. ठीक है, मिक्स तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इस सम में क्योंकि एक ही रॉ मटेरियल है. मैं आपको और एक वरायंस कैलकुलेट करके दिखाती हूँ एंड दैट इज योर मटेरियल, वो लास्ट वाला यील्ड वरायंस. ठीक है, so I'll teach you that also. So material yield variance is the next thing that I'll calculate and show it to you. Fine. So वो भी मैं calculate कर लेती हूँ. Yeah. चलो I'll do it here. Fourth one, material yield variance. Formula is total standard quantity minus total actual quantity into average standard rate. तो total standard quantity ये रहा. I'll show it. ये रहा total standard quantity, ये रहा 40,000. See the total column and total actual quantity, this one 42,000. Okay, so this is my total standard quantity and this is my total actual quantity.
Okay, since it's your first sum, please highlight all these figures. Okay, so 40 minus 42, 40,000 minus 42 into average standard rate. I just showed you in the theory how to calculate that, but the point is यहाँ हमारे पास एक ही रॉ मटेरियल है. तो मैंने आपको क्या बोला, आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो एवरेज स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए. What formula will you use for calculating average standard rate? I'm writing it here. How will you calculate average standard rate? Yeah, total standard cost upon total standard quantity. Okay, that's how you will calculate the rate. So 40,000 minus 42,000 into total standard cost 10 lakhs divided by 40,000. 10 lakhs divided by 40,000 kgs. Solve this. 40 minus 42 into 10 lakhs divided by 40. Answer is 50,000 adverse. Okay, 50,000 adverse. ठीक है, हो गया स्टेप. MMV cannot be found, material mix variance is not applicable. Yeah. If you want, I'll show it here also to y'all. Y'all can write this as 5 and I will write it here. Okay, material mix variance is not applicable in this question. Okay, ऐसे कैलकुलेट होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, बट पहला तो आपको सिलेबस में नहीं है, दूसरा इसमें कैलकुलेट नहीं हो सकता है. ओके, इन दिस क्वेश्चन as there is only one raw material. Okay, am I clear? Finished. And last step, step 3 is to verify your answer. Right down, step 3 is verifying your answer, verification. And verification is very simple. Okay, ये जो मैंने आपको चार्ट बताया था, ये वाला, यही आपका वेरिफिकेशन स्टेप है. Okay, this itself is your verification step, this chart which I had showed you. Yeah. See, you don't have to write this in exam. है ये जो मैंने अभी बनाया है चार्ट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. ओके, सो henceforth नेक्स्ट सम से मैं ये चार्ट ऑब्वियसली नहीं बनाऊंगी. दिस वाज ओनली फॉर योर रेफरेंस फॉर थ्योरी. Okay, and so that you can understand the formula, so I had done it. So come to the verification step. How to verify your answer? First, material cost variance. अगर आपको चार्ट याद है तो it is divided into two, material rate variance and material usage variance. ठीक है, चेक करो material rate variance कितना है, 21,000. F मतलब पॉजिटिव, प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना है, 50,000. A मतलब नेगेटिव. ओके, सो प्लस माइनस माइनस होता है, बराबर. या तो 50,000 एंड नेक्स्ट इज 21,000. कितना हुआ, 29,000 एडवर्स. ओके, आंसर इज हाउ मच, 29,000 एडवर्स.
50,000 has a 50,000 has a greater sign, A. Okay, now check our answer. हमारा स्टेप 2 में मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस कितना आया था? 29,000. Okay, so लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, आपका इक्वेशन टैली होता है. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल क्रॉस चेक. योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड. इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, material usage variance is further classified as material mix variance plus material yield variance. Okay, okay, material mix variance is not there in the question, so write down not applicable. या डैश लिख सकते हो, बट जीरो मत लिखना. Material yield variance, how much answer I got? 50,000. Material yield variance. What was my final answer? Yeah, 50,000. Material yield variance. Okay. So check. Material yield variance का मेरा आंसर है 50,000. A. And material usage variance also, my answer is 50,000. So my left hand side is equal to my right hand side. Once I get that, my equation tallies. That means my solution is correct. Is it clear to everyone? समझ में आया the 3 steps? Step 1, 2, 3. Step 1 is what? You have to equate if it is not equal. Okay. Step 2 में you will do the calculations, and step 3 में you will verify your answer. So these are the 2 equations that you will verify in material cost statement. Okay. So remember all these things for theory purpose also. Okay. Now I'll take you to a next question. Just make you to the introduction of it. Now look at this question. You have to calculate what? वही same चीज़ है. Material cost variance, material price variance, material usage variance. ठीक है. But